Assalamu alaikum. You are seeing here all the models of science prepared by the efforts of the students of different classes. This is the model of a photosynthesis prepared by the students of class 7, and here is the model of food web that is prepared by the efforts of the students of class 9, and here is the model of air pollution also prepared by the students of class 9. This is a periscope model that is prepared by the students of class 8. You can see here the light is reflecting on the top of the periscope. इसमें अंदर लगाए हैं, इसमें हाथ शीशे पे नज़र आ रहा है ऊपर में. ये वर्किंग मॉडल है. जब हम हाथ नीचे इसको हम दिखा रहे हैं तो ऊपर वाले जो मिरर इसका लगा हुआ है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा. ये वर्क कर रहा है, इसमें लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है 90 डिग्रीज के ऊपर. ये पेरिस्कोप है. और उसके बाद ये जो मॉडल है एसिड रेन का है जो क्लास 9 के बच्चों ने बनाया है. ये बहुत खूबसूरत मॉडल है. एसिड रेन कैसे काज होता है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं. और इसके बाद ये मॉडल है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, जिसमें बहुत सारे जानदार आपको दिखाई दे रहे होंगे. ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज़ है, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम. उसके बाद देयर इज़ अ मॉडल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन फ्रंट ऑफ यू. दिस मॉडल इज प्रिपेयर्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. एंड हियर इज द मॉडल ऑफ air pollution, water pollution and soil pollution. This whole model is prepared by only one student that belongs to class 7. And this is the model of simple machines in front of you. This model is also prepared by the students of class 7. These all are the simple machines like such as pulley, wheel and axle, inclined plane and lever. This model also prepared by the students of class 7. And here is the model of zoo that is also prepared by the students of class 7. Students participated well in this science exhibition to enhance their abilities to take part in these kind of celebration. This is the model of chromosomes in front of you that is prepared by the student of a class 8. This is a model of chromosome which consists of chromatids and centromeres. There is a model of DNA that is also prepared by the students of class 8. And last but not the least, there is the model of ecosystem that is prepared by the students of class 9. Thank you.